Assalamualaikum. Respected Headmaster Sahab, teachers and dear friends, Assalamualaikum. My name is Muzammil. Today my topic is इल्म के फ़ायदे. इल्म एक लाजवाब दौलत है. इल्म एक बेमिसाल ताकत है. इल्म ही से खुदा को पहचाना, इल्म ही से बुरा बुरा जाना, इल्म ही आदमी बनाता है, इल्म ही से आदमी की इज्जत है, इल्म ही से आदमी में हिम्मत है. इल्म ने अकुल को जला दी, नई दुनिया हमें दिखा दी है. हर तरफ उड़ रहे त्यारे इल्म से इल्म की धुन जिसे लगी नहीं. सच तो ये है कि वो आदमी ही नहीं. ये असर हो दुआ नीर में इल्म, ये असर हो दुआ नीर में इल्म की रोशनी हो घर घर में. The greatest name of Almighty Allah, who knows our secrets of my heart. Assalamu alaikum, champions and faculty. This is Shehzad. I wanted to deliver self-confidence. Self-confidence means having belief in ourselves. Self-confidence can't be taught anyone. And we have developed in ourselves. We have different goals in our life. What is that? We have different goals in our life. If we wanted to achieve them, the self-confidence major factor. The self-confidence major factor doesn't mean that confident persons always win and achieve, but self-confident person always able to face any different situation in their life. The self-confidence helps to deal stress with stress and anxiety. This can't build our boss in a day. Needs time. So start believing in yourself. Never shy at poor things or clothes, poor friends, poor simple living, or mom and dad. I need my speech with Allah my balls of poetry. मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, या मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर. मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर. हर शीशा टूट जाता है, क्या शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से. शीशा पत्थर ही टूट जाए, वो शीशा तलाश कर. थैंक यू. Assalamualaikum. Today my topic is शाह अब्दुल लतीफ भिटाई दे शेर जी शुरुआत. जाग भिटाई घोट तोखे सुंदरी पई सडड़ा करे, मरन पयूं मारियूं हिते काबू आहिनि कोट. अच त तुंहिंजी ओट ॾाढनि खे ॾारे विझूं. जीए सिंध जीए लतीफ जीए सिंधी ॿोली.